Assalamu alaikum everyone and welcome back. I am your favorite host and the one who is always smiling, architect Sheheryar. And I'm the one shining next to him, architect Maheen. And you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. So हमारी आज की episode is a continuation of our previous episode in which we have discussed the basics of the architecture of Pakistan. First of all, I would like to thank all our viewers and our followers on our social media platforms. Your views, your reviews, your suggestions, your opinions are always welcome and they are always appreciated. So आज के episode में हम लोग अपनी जो topic है उसको हम conclude करेंगे. उसके साथ साथ हम लोग explore करेंगे कुछ queries को जो कि आप लोगों की तरफ से आई थी. So let's just dig in. Yeah. So starting with our pehli query, and you can see it somewhere on the screen. It's by Sheheryar. So I agree कि जो architecture of Pakistan का topic है, it has been discussed ad nauseum. But why is that? We as someone discussing the topic and also we as someone listening to a discussion like that fail to understand कि इसकी importance क्या है. हम free हैं, हमारे पास बहुत time है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा क्या है that leads us to discuss this in the first place? It's the architecture of Pakistan that depicts utter confusion, right? And the real value behind finding an answer to this question is that what went wrong when we had a history of architectural experience regionally to learn from to produce contextual architecture, but we somehow ended up here. Now you say that what's the point of finding what went wrong? It's because when you identify a problem, that's how you dissect it. आपको पता ही नहीं होगा कि problem क्या है, so आप issue को resolve कैसे करेंगे, right? This Maheen has talked about contextual architecture, ठीक है. और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो पे भी बात की थी कि हमें अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, देन गंधारा है हमारे पास, ठीक है. उसमें बुद्धिज़्म है, मोहनजोदड़ो है, मुगल है, हिंदू शाही है, राइट. एंड देन उसके बाद सिख है, कॉलोनियलिज्म है. And then post independence architecture, we see up till 70s जो पाकिस्तान में architecture practice हो रहा था, that was a reflection of all these जो कि पीछे हो चुकी हुई हैं. But then something went very wrong. So this leads to our second query and we're going to talk about it now. Yeah. So our second query is a part of our first query and it says, does defining and by extension limiting identities actually enhance the practice in any way? So it does. पहले तो just to clarify that by defining an identity, it does not imply कि आप उसकी evolution को limit करें until and unless आप लकीर के फ़कीर हैं. Now, how does defining an identity enhance the practice in any way? हम सब ने सुना है that we shape our building and our buildings shape us, right? और I believe in this कि architecture किसी भी जगह का help करता है to formulate उस जगह की national identity. स्मॉल स्केल पे अगर हम समझें तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे ऑलवेज कमीशन आर्किटेक्ट टू मेक अ वर्क प्लेस जो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती हैं. वाई इज दैट? बिकॉज दे वांट टू फॉस्टर देयर आइडेंटिटी टू एनहांस देयर ब्रांड वैल्यू. छोटे स्केल पे अगर हम समझना चाहें, इसी को अगर आसान करके और समझाऊं मैं, सो किसी भी चीज़ की एवोल्यूशन का प्री रिक्विजिट है कि वो एग्जिस्ट करती हो. वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सो वो इवॉल्व कैसे करेगी? We do not belong to a land with no history or no identity, right? By following UAE or Europe, you can't say that our practice is evolving because where is it evolving from? आप किसी और की identity से evolve नहीं कर सकते हैं, right? आप किसी और की identity को adapt कर सकते हैं, evolve नहीं कर सकते हैं. So by defining identity, we're not saying that it's Mughal, stick to it, right? But we are saying that it's multi-layered, so learn from it to produce architecture that has a sense of belonging, that's not technocratic in nature, that doesn't give the feeling that you've seen it already but in a better version, or that does not exuberate randomness, right? And speaking about the randomness, our history and as far as our knowledge is concerned, things took a very sharp turn, especially after the Afghan war, right? उसके बाद काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है हमें फ़र्क नज़र आता है, चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारी पोइट्री हो, चाहे वो हमारा सोशल हमारे नॉर्म्स हो, रिलीजियस बाउंड्रीज हो. हर चीज़ पे जो है वो चेंज आया था. एंड हम इस चीज़
को इग्नोर नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। एंड अगर हम बात करते हैं लेट 80s की, दिस वाज एग्जैक्टली द टाइम जब यूएई में, यूरोप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, और उस डेवलपमेंट की वजह से जो है पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्री से बहुत ज़्यादा जो था वो लेबर जा रहा था। तो हो ये रहा था कि वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ से इन्फ्लुएंस लेते थे, और वो इन्फ्लुएंस जो है वापस पाकिस्तान में आ रहा था, और उससे जो है वो एक अजीब सी किस्म की जो है वो खिचड़ी सी पक गई, राइट? कैन आई से दैट? ओके। और वो चीज़ें लाइक इतनी ख़राब होगी दैट थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड एंड द स्ट्रिंग्स गॉट डिटैच्ड। सो ड्यू टू दोज सर्कमस्टांसेस आवर प्रॉब्लम्स बिकेम मल्टी लेयर्ड, और यही वजह है जिसकी वजह से हमारा आर्किटेक्चर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। तो स्पीकिंग ऑफ दिस, लेट्स आंसर आवर वेरी थर्ड क्वेरी। सो हमारी थर्ड क्वेरी जो है उसको हम कंबाइन करेंगे फोर्थ क्वेरी के साथ, एंड वी आर गोइंग टू आंसर इट कलेक्टिवली। तो किसी भी जगह का जो आर्किटेक्चर है उसकी डिपेंडेंसी एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन इज ऑन टू वेरिएबल्स, कल्चरल फिजिबिलिटी एंड क्लाइमेटिक फिजिबिलिटी। इसी डिस्कशन में वी डिस्कस्ड के पाकिस्तान का आर्किटेक्चर बिफोर द मॉडर्निज्म वेव हिट, उससे पहले वाज सेंसिबल इनफ। सो when we say sensible enough, we didn't mention कि वो architecture जो था it belonged to the state or it was the architecture sponsored by the elite patrons, okay? We didn't mention it. कभी छोटे मोहल्लों के पुराने घरों में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आपने ये देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि बाहर तपती हुई गर्मी होती है ना, और आप एंटर होते हैं तो फैन की जरूरत नहीं पड़ती। This is what you call constructive feasibility. आपने जो बारे देखे होंगे कवर्ड विद वुड, आप एक्सपोज नहीं होते बट यू कैन सी अराउंड, राइट? आजकल दोनों ही नहीं है। आप कोई भी घर देखते हैं, यू मूव अराउंड, आप किसी भी जगह जाते हैं, पहला यू कांट सर्वाइव विदाउट एन एसी आजकल, राइट? दूसरा, सब घरों के, मोस्टली घरों के सामने देयर टेरेसेस पे मैंने आज तक किसी को बैठे हुए नहीं देखा, बिकॉज अगर आप वो जगह इस्तेमाल करते हैं तो गुजरते हुए लोग आपको घूरते हैं, राइट? दैट्स दिस वेस्टेज ऑफ द स्पेस। इन दोनों चीज़ों की एग्जांपल्स आपको गुजरे हुए वक्त में मिलती हैं, गुजरे हुए आर्किटेक्चर में मिलती हैं, द कल्चरल फिजिबिलिटी एंड द क्लाइमेट फिजिबिलिटी। एंड फॉर मी, अगर आप लोगों को बेसिक लेवल पे ये दोनों कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो यू कैन कॉल दैट आर्किटेक्चर फॉर पीपल। And architecture for people is something you cannot link here in this discussion at the moment because we are talking about the identity. But we ourselves are very much advocate of architecture for humanity, and we would love to discuss about it in our later discussions. Right? Include the queries. एक और example मैं देना चाहूँगी because there was a confusion regarding cultural norms and cultural feasibility in a comment. आपने अपार्टमेंट्स देखे होंगे, हमने अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट लिया है बाहर से, सोशल फिजिबिलिटी असाइड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखते हुए आजकल बहुत अपार्टमेंट्स दिखते हैं आपको बाहर। दे हैव कलेक्टेड लॉन्ड्री स्पेस और लॉन्ड्रोमैट्स, और देयर इज एन ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक मशीन फिक्सचर्स, जो कि बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है इन योर कॉन्टेक्स्ट। सो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग द बालकनी स्पेस टू ड्राई आउट देयर क्लोथ्स, राइट? इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? दिस इज द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। एज एन आर्किटेक्ट, एज एन आर्किटेक्चरल कम्युनिटी, वी ऑल नो कि आपकी सर्विसेज हमेशा बैकड्रॉप पे होती हैं, कभी भी फ्रंट पे नहीं होती हैं। देयर शुड बी एन एस्थेटिक वैल्यू कनेक्टेड टू व्हाट यू आर कॉपिंग। अगर वो आपके कल्चर में एम्बेड नहीं हो सकता तो वो कैसे इवॉल्व करेगा इन अ गुड एस्थेटिक वे, राइट? आई गेस दैट वाज इट। या एंड एडिंग टू दैट, हम लोग अपने कपड़े भी धो के जो फ्रंट पे लगाते हैं, गीजर लगे होते हैं, दे लुक हॉरिबल। So let's discuss what we can do to resurface the identity of architecture of Pakistan. इसके लिए अगर हम देखते हैं, वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया, ईरान। वहाँ पे भी इनिशियल उनके पार्टीशन के टाइम पे जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस हुआ, ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल आए थे। फॉर एग्जांपल ले कोबूजियर इन इंडिया। बट द थिंग इज कि उन लोगों ने अपने कल्चर को, अपनी सोशल नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं उन्होंने भूला, राइट? एंड यही वजह है कि वहाँ पे आज भी जितना मॉडर्न आर्किटेक्चर प्रैक्टिस हो रहा है, yet if we see the pictures or anything, हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये इंडिया का आर्किटेक्चर है, ये बांग्लादेश का आर्किटेक्चर है, ये ईरान का आर्किटेक्चर है, राइट? सो आई थिंक वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। जस्ट टू ऐड वन थिंग मोर, कि जो एलिमेंट्स हमारे लैंड से बिलोंग करते हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, वी नीड टू लर्न दैट सो दे कैन लीड आवर डिज़ाइन प्रोसेस। और हम इमेंसली
इन्फ्लुएंस ना हो जाए उन सक्सेसफुल आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल से जो किसी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की हैं, बिकॉज दे वॉन्ट फिट हेयर इन एनी वे, राइट? So we have discussed in our previous video and now as well. I think there is no harm in practicing a different sort of architecture. एक different आप नई नई चीज़ें ऐड करनी, चाहे वो material है, type of construction or anything else. But the thing is, at the same time, we as architects and as nation, we should not forget our history, our culture, our values, because end of the day, these are the things that are going to be the main elements of our architecture. So I guess we have summed it up pretty well. Hopefully. And we have answered as many queries as possible. So do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on our socials, which includes Instagram, Facebook and all. Yeah. So you can join Arkistan by visiting www.arkistan.com/register. Yes. So see you inshallah next Sunday at 8 p.m. with a different topic. Until then, take care all of you. Allah Hafiz.